So, hello everyone, I'm Sudipta. Again, welcome back to my class. So, welcoming you all to Vedang Teachings powered by Vedang Institute of Technology. So, tell me, how are you guys? How are you guys? How are you all? Tell me. Start kariba class. So, again, आपण माने जानी चंती हमारा बैच महापैक रो प्राइस. Guys, महापैक रो प्राइस केते रहउची? Just 3499 and your validity guys 1.5 year तक रहउची यार validity. With that guys, ये महापैक अंडर रे आपण मानकर PO बैच पे आसी जिवो, ए CGL बैच पे आसी जिवो. With that आपणकर ओडिशा स्टेट एग्जामिनेशन रो जेतिक वन डे एग्जामिनेशन अछि सबुतिक एक्सेप्ट द OCS 1 याकू छाड़ी कि ओडिशा गवर्नमेंट अंडर रे जते भी एग्जामिनेशन आसीबो ये ता अंडर रे आपणकर कोन ना मैम कवर अप हे जिवो. सो देखंतु PCM hela, CBZ hela, arts hela, year of validity guys 1 year and price is just 1499 for you. Clear? So first question for you. Tell me. First question for you guys, the basic structural and functional unit of protein. आपण मानु कोन पचरला ना the basic structural and functional unit of protein पचरिला. एटा I think last class रे मु biochemistry discuss करिथिली. जदि repeat होउची then guys revision ने जाओ, do not go for the कि मैम काहे की repeat करले. Okay, so मते को what will be the right answer? जदि repeat अछि ताल त question जल्दी कहि देबा कथा. That is amino acid. कोन अछि ना मैम amino acid. Clear? So आमे कोन कहूचे ना amino acid को that is the building block of protein and आमे कहिबा 20 standard amino acids 9 are essential and essential कोटा कहूचे ना those are cannot be synthesized, they are considered as the कोन ना मैम essential amino acids. Like आमे कहि परिबा that the amino acids are linked with the peptide bonds. Amino acids माने को bond form करंती जदि आपण मानकु क्वेश्चन ने पचारिला they are the peptide bond. Clear? कोन ना मैं पेप्टाइड बॉन्ड क्रिएट करंती एंड कंटेन द अमीनो ग्रुप को भी अमीनो एसिड ही कंटेन करिवे. सो अमीनो ग्रुप कोन होची ना मैम NH2 माइनस. यस और नो? यस मैम. कार्बोक्सिलिक ग्रुप को भी कंटेन करची. व्हाट आर द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ना मैम COOH and hydrogen and the side chain number कोन ना मैम R ग्रुप रुहे. सो फैटी एसिड कहिले आपण माने कोन कहि परिबे ना जदी फैटी एसिड पचला जदी आपण माने को बेसिक यूनिट ऑफ लिपिड पचरिला एठी कोन बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन पचला आपण माने कहले अमीनो एसिड जदी बेसिक यूनिट ऑफ suppose your question should be the basic unit of कोन ना मैम बेसिक यूनिट ऑफ द लिपिड्स पचरी देला. बेसिक यूनिट ऑफ लिपिड्स पचारिले आपण माने कंसीडर करिवे दैट इज द फैटी एसिड्स. यस और नो? एंड हमें कहि परिबे दैट गिव्ड ए सैचुरेटेड. ए जो फैटी एसिड्स हमर टू टाइप्स रो थाय. वन इज द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स. माने रखो फैटी एसिड्स हमर कोन ना टू टाइप्स रो. वन इज सैचुरेटेड फैटी एसिड, another is unsaturated. Unsaturated one. So saturated हमें consider करूचे the palmitic, steric, these are the saturated one. Whereas unsaturated हमें consider करूचे the oleic हेला, linoic हेला, these are the unsaturated one. And ये unsaturated को हमें कौन कहूचे ना मैम याको हमें essential भी कहूचे. याको हमें essential बोली consider भी करूचे. Yes or no? Yes ma'am. And that stored as a ट्राइकोग्लिसराइड विथ द ग्लाइकोल ता सहित हमर ये रहे और ग्लिसरॉल सहित भी हमर ये रहे. न्यूक्लियोटाइड हेले कोन कहउछ नाम जदी हमकु बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड मैम पचारिबो कोन पचारिबो ना. हियर सपोज योर क्वेश्चन विल बी द व्हिच इज द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. Basic unit of nucleotides to the pachara gala, then your answer should be the nucleic acids. Yes or no?
द न्यूक्लिक एसिड जदि पचारा गला ताहाले आपण माने कोन कहबे दैट इज द न्यूक्लियोटाइड्स गाइस यस और नो सर पिला माने देखंतु हमर पिंकू सर आसी तम को देखि कि हसुचंती कि एते सिंसियर पिला तमरा बॉटनी क्लास रे अछंती एते पिला तमरा बॉटनी पढुचंती गाइस त माने प्लांट साइंस को सत्तर कोन भल पाउनो त माने साइंस को भल पाउचो त माने एनिमल साइंस को भल पाउचो बट प्लांट साइंस को भल पाउनो बिकॉज ऑफ द प्लांट्स त माने आज के डेट रे सर्वाइव करिचो हबो टिके सर हसंतुनी मते हस लागुची चलो तो नेक्स्ट मते कुआ यस नेक्स्ट मते कुआ हमें कहि परिबा प्रोटीन्स को कोन कहूचे ना दैट इज द अमीनो एसिड्स कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज द मोनोसैकेराइड जदि आपन पछरे गला द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बेसिक सेम क्वेश्चन सेम जदि आपन को या जगह कोन पछरला ना मैम कार्बोहाइड्रेट्स पछारी देला कोन कार्बोहाइड्रेट्स कार्ब्स पछारी देला ताहाले आपण माने कोन ना मोनोसैकेराइड को कंसीडर करिवे यस और नो यस मैम सो आपण माने मने रखंतु काहा को पांचटा जिंस आपण कहबी ताकू पूरा कॉपी करी कि मने रखिबे कोन ना प्रोटीन जदि कहउचंती मैम इफ प्रोटीन आसिला ताहाले हमें कोन ना मैम अमीनो एसिड को कंसीडर करिबा जदि आपण मान को कार्ब्स आसिला ताहाले हमें मोनोसैकेराइड को जदि आपण मानकर लिपिड्स आसिला ताहाले हमें काहा को ना फैटी एसिड्स एफ लिखिची प्लस प्लस काहा को ना मैम ग्लिसरॉल को देन गाइस जदि आपनकर पछाला न्यूक्लिक एसिड कोन ना न्यूक्लिक एसिड पछाला ताहाले आपण माने कोन ना न्यूक्लियोटाइड्स को यस और नो यस मैम एतिक मन रखिबो वेरी गुड चलो नेक्स्ट को जिबा मते को व्हिच बॉन्ड कनेक्ट्स अमीनो एसिड्स इन ए प्रोटीन चेन एबे कहितिली प्रोटीन चेन रे गोटे बॉन्ड फॉर्मेट हुए मते को बॉन्ड हमें ता कहूचे ना मैम पेप्टाइड बॉन्ड को बॉन्ड ना पेप्टाइड बॉन्ड यस ना नहीं चैतन्य पेप्टाइड बॉन्ड मधुस्मिता को बॉन्ड हबो ना पेप्टाइड बॉन्ड ही हबो सो पेप्टाइड बॉन्ड इज कंसीडर्ड एज ए कोवैलेंट बॉन्ड दैट इज बिटवीन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ one amino acids and the amino group of the another strong that means the planar grid हमें ताकू कंसीडर करि परिबा यस और नो यस मैम हाइड्रोजन बॉन्ड हैला हम जानते हाइड्रोजन बॉन्ड इज वेरी वीक एंड दिस इज important in the secondary structure suppose आपण माने अल्फा हेलिक्स नेले बीटा शीट नेले एठी आपण मानकर सेकेंडरी स्ट्रक्चर रे रहिबो हाइड्रोजन बॉन्ड जदि आपण माने को कोन ना डाइसल्फाइड बॉन्ड पचारिला डाइसल्फाइड बॉन्ड हमर कोन था दिस इज अगेन ए कोवैलेंट बॉन्ड बट बिटवीन द टू सिस्टाइन रेसिड्यू भितरे ये हमर रहिबो तो याकू आपण माने कंसीडर करिवे नाही चलो नेक्स्ट मते को द एंजाइम व्हिच कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज सो गोटे एंजाइम अछि गाइस जे हमर कन्वर्ट करे स्टार्च को माल्टोज रे ताहाले मते राइट आंसर कोन हबो दियो the enzyme which converts the starch into maltose that is what na ma'am that is the amylase kon habo chaitanya madhusmita comment that is amylase yes or no yes ma'am that convert the starch into the maltose that is the amylase and the salivary amylase ko ame kon कहूचे ना ma'am tyline कहूचे मन रखो हमर salivary जो amylase present रहूची that is the salivary amylase right salivary amylase तांको हमें कौन कहूचे ना मैम ताको ही हमें कौन कहूचे ना मैम ट्राइप्सिन कहूचे एई वाला नुह ए ट्राइप्सिन नुह ताको टाइलिन कहूचे गाइस ताको टाइलिन कहूचे कोन ना मैम टाइलिन बोली ताको हमें कहूचे यस और नो यस मैम वेरी गुड एंड गाइस हमें कोन बन रखबे salivary amylase हमर कोठु बाहरे ना ऑब्वियसली माउथ थ्रू बाहरे एंड गाइस pancreatic amylase acts in the small intestine मन रखो जदि अपन मान को पचार गला ए जो pancreatic amylase कोठी आसीबो ना मैम pancreatic amylase हमर कोठी ना मैम ये small intestine रे काम करबो ये स्मॉल इंटेस्टाइन रे काम करिवो यस और नो यस मैम देन कहला पेप्सिन रो कोन रोल रहउची ना दैट इज द प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम ए पेप्सिन रो कोन काम ना मैम पेप्सिन इज द प्रोटीन डाइजेशन एंजाइम यस और नो यस मैम
ताको आपण माने कंसीडर करिवे देन मते को ट्रिप्सिन को आपण माने कोथरे कंसीडर करिवे व्हाट इज द ट्रिप्सिन एग्जैक्टली ना मैम trypsin is also a protein digestion enzyme but that is only in the कोठी ना मैम only small intestine रे this is only small intestine रे relate करिवा सो आपण माने एतिक जिन मन रख परिबे amylase को हमें कोन कहउचे that is the fast digestive enzyme to act in the human case रे जदी को digestive enzyme पूरा fastly काम करे तेटा कोन ना मैम that is the amylase एतिक relate करि परिबो the fast digestive enzyme in human कोठी ना मैम human गथरी that is the amylase yes or no yes तो right चलो next मते को but exception कोठी रहबा ना rhizobiums sorry ribozymes कोठी ना ribozymes are the exceptional जो कि RNA थाए with the catalytic activity yes or no चलो नेक्स्ट देखिबा लिपिड्स कोन करूची लिपिड्स सॉरी लिपिड्स एंड विटामिन्स एरा सब ऑलरेडी आपण माने जानि छथि राइट गोटे मिनिट okay sorry for the inconvenience this was the official call so I had to attend okay so tell me next ku jiba to very good chalo next ko enzymes are chemically these are the proteins lipids vitamins or sugars enzymes are chemically what enzymes मानु का मैं कौन कहूचे these are chemically actually माने कौन ना मैम proteins कौन कहूचे ना proteins कहूचे so almost all the enzymes are the proteins example आपण माने परिबे amylase lipase DNA polymerase कौन नेबे amylase नियंतु amylase देखंतु amylase lipase
DNA polymerase ए सब गुड़ा आमर कौन ना दीज आर द काइंड ऑफ प्रोटीन्स ओके क्लियर वेरी गुड बट एक्सेप्शन कोटा रहिबो ना द राइबोसोम्स कोन ना आरएनए विथ द कैटालिटिक एक्टिविटी दैट इज द राइबोसोम मन रहबती कि सो लिपिड सहित आपण माने कोन लाइक लिपिड सहित आपण माने लिपिड सहित मते कोंतु कहा सहित कनेक्ट करि परिबे ना दिस लिपिड्स आर द एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स and guys that forms the membranes that is phospholipid and the cholesterol एतिक मन रख परिबे not the enzyme vitamins हेले कोन मन रखसनी that organic compounds सहित रिलेट करिवो organic compounds सहित रिलेट करिवो and act as a coenzymes for the precursors example माने आपण कोन नेबे ना niacin plus NAD niacin हमको give rise कोन करछि NAD plus the riboflavin कोन करछि ना FAT ठीक मन रखिबो very good sugar को हमें कोन कहै ना मैम that is considered as the carbohydrate yes or no that provides the energy next देखो optimum temperature for most enzymes in the human body is tell me optimum temperature for most enzymes in the human body is what is केते रहइबो टेम्परेचर कथा पचारिची तर आमे कहि परिया for most human enzymes that is the matches the body temperature that is 37 degrees celsius का सहित 37 डिग्री सेल्सियस तमाने को मेसेज मते ते लेट रे कोन पई आसुची आई डोंट नो रियली आई डोंट नो तो चलो नेक्स्ट मते को ह्यूमन एंजाइम्स आपण माने मन रखुन 37 डिग्री सेल्सियस दैट इज द एक्स्ट्रोमोफाइल्स दैट इज नोन एज द बैक्टीरिया हैव द एंजाइम्स दैट इज स्टेबल एट द 80 to 100 डिग्री सेल्सियस ऑलमोस्ट नेक्स्ट को व्हिच इज अ डाइसैकेराइड काहा को गोटे डाइसैकेराइड बोली कंसीडर करू छे मते को which is considered as a disaccharide tell me glucose तो नहीं glucose का मैं monosaccharide ही consider करछी because that is mainly blood sugar रे पाउछे and immediately ये कौन होची immediate energy source भी हमें पाउछे so maltose what will be the right answer tell me what will be the right answer कोन ना मैम maltose that is the disaccharide glucose plus glucose हेले हमें कहउछे disaccharide ओके तो कोन हबो ना मैम maltose मन रहबती की relatable so known as the malt sugar काहा को हमें कहबा malt sugar that is the maltose malt sugar बोली हमें maltose को कहउछे yes or no yes ma'am तो मते को fructose so this is a monosaccharide again that is the sweetest sugar that is found in the fruits and honey रे हमें कोन पाउछे ना मैम हमें fructose ही पाउछे so मने रखो सुक्रोज हेले कोन कहउछो ना मैम जदी सुक्रोज हमें कहिबा सुक्रोज will be कोन ना मैम ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज जदी आपण मान को कोन पचाला माल्टोज जदी माल्टोज पहिला कोन कहै छी ना माल्ट सुगर दैट मींस ए माल्टोज सॉरी माल्टोज नहीं ये फ्रुक्टोज प्लस फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज प्लस फ्रुक्टोज ना ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज कारण माल्ट सुगर ना ग्लूकोज पळे आसीबो गाइस दैट इज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज देन जदी आपण मान को पचारिला कोन ना लैक्टोज काहा को आपण माने कंसीडर करिवे मते कुहंतु लैक्टोज पचारले कोन कहिबो ना मैम दैट इज द ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज की आसीबो ना ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज रिलेटेबल ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ग्लूकोज प्लस लैक्टोज एतिक मन रखिबो चलो नेक्स्ट Next, the stored form of carbohydrate in animals is the stored form of carbohydrates. The stored form of carbohydrates in animals is what? That is the glycogen. कौन रहिबो? That is ma'am glycogen ही रहिबो. The storage carbohydrates in the plants in the form of what? Storage carbohydrates. The plant amara in the form of starch store the carbohydrates in the plants in the form of starch and the made the amylase and the kono na amylopectin okay so amylase and amylopectin को relate करिबा कहा सहित ना मैम ग्लाइकोजेन सहित relate करिबो yes or no yes ma'am then मते सॉरी कहा सहित ना स्टार्च सहित relate करिबो हैला so glycogen हेले कोन हबो ना glycogen is the animal starch glycogen को हमें कोन कहू छी ना मैम this is considered as the animal starch
Okay, so this is highly branched polysaccharide and that is stored the animal starch कहछि obviously human body रे ही रहिथिबो animal body रे रहिथिबो प्रणाम नारायण. So that is found in the that is stored in the liver and the muscle of the human or the animal. कोठी liver and muscle रे हमरो देखिबा को मिले, right? Okay. So cellulose कहले आपण माने कोन बुझिबे ना, the plant structural carbohydrates is the cellulose in the form of beta 1 and the 4 glycolysis linkage. Glycolysis linkage कहले आपण माने कोन बुझिबे, that is the intangible one, that is the indigestible one to the humans, that is only found in the plant cases. Then maltose कहले आपण माने कोन बुझिबो ना मैम, that is the disaccharide one. Disaccharide, that means that cannot be storing. So next ku चलो मते को व्हिच सुगर, मते कुह व्हिच सुगर, मते कुह व्हिच सुगर is called the fruit sugar. अच्छा एबे कहिला मते fruit sugar, that means हमर कोठी ना naturally fruit रे में पाउचे and naturally ताको हमें कोठी ना मैम honey रे भी पाउचे. So that sugar is known as wheat sugar. Tell me what will be the right answer. Which sugar is that? Tell me. Glucose तो केबे होबनी, कारण glucose found in the blood sugar. Glucose हमर कोठी मिले ना मैम blood sugar हमें पाउचे, that is the glucose. So what will be the right answer? कुआ मते, yes, that is the fructose. No ma'am कोन? No ma'am कोन? Yes ma'am कुआ? कहले no ma'am. Okay, so fructose, that is the sweetest natural sugar, that is the sweetest natural sugar and that is found in the कोठी ना fruits, honey and हमर जेते corn syrup अछि सेथिरा में पाउचे कहा को ना मैम fructose को पाउचे. Is that clear? Very good. चलो नेक्स्ट. अच्छा लैक्टोज कहले कोन कहबो ना, जति आपण मानु को मिल्क सुगर पछरले जोटा कि ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज त मानु को कहितली. लैक्टोज रो फॉर्मेशन केमिति होची ना, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज मिसी कि लैक्टोज करूसंदी एंड ताको फाउंड कोठी परुची ना, हमें ताको पाउचे मिल्क रे. सो दिस इज आल्सो नोन एज द मिल्क सुगर. कहा को ना लैक्टोज को हमें कहूचे, दैट इज कंसीडर्ड एज द मिल्क सुगर. यस और नो? यस मैम. देन मते कुआ हमारा माल्टोज को कौन कहूचे ना माल्ट सुगर, कारण से कौन ना ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिसी के बनौछि माल्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज एंड आपको हमें कौन कहूचे ना मैम दिस इज नोन एज माल्ट सुगर. देखो गोटे होची मिल्क सुगर, दैट इज द लैक्टोज वन, गोटे रहउची कौन ना माल्ट सुगर एंड मिल्क सुगर भितरे केबे भी कंफ्यूज हेबे नाही. क्लियर? जिबा नेक्स्ट. Which carbohydrate is known as the milk sugar? Again आसी गला एबे तो इजी हे जिवो त माने पई को मते which carbohydrate is known as the milk sugar? किए ना one and only, that is the lactose. देखो मिल्क रिलेटेड आपण मानकर आसी होची ना, मिल्क रे को एसिड अछि ना लैक्टिक एसिड अछि. सो L for lactic acid, L for lactose and मैम लैक्टिक एसिड त हमें मन रखि छोटरू मिल्क सहित रिलेटेड. एई अकॉर्डिंग तो मन रखि परिबो ना. साइंटिफिकली बोटानिकली जदी मन न रखि पारुचो, डे टू डे लाइफ रे जो साइंस आपण मानकर आसुची ता रिलेटेड मन रखि परिबो. यस. सुगर ओल्ड मैन एंड वुमेन, सुगर ओल्ड मैन एंड वुमेन. चलो ओके वेरी गुड. चलो किछि भी नारायण. नेक्स्ट मते को द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. The process of glucose breaking down in the absence of oxygen, ताको हमें से प्रोसीजर को कौन कहूचे मु आपण मानकु को सब बेले कहिची. जदी ऑक्सीजन कथा पचारिबा आपण माने मन रखंतु स्टार्टिंग रे माने हमर कोन हमर बॉटनी प्लांट साइंस रे देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हुए. वन इज द एनारोबिक, अनदर इज द एरोबिक. इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन द रिएक्शन इज द एरोबिक रिएक्शन, absence रे हेले एनारोबिक. बट एठी कोन पचाची ना ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हुए, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हुए इन द हमर अपन absence ऑफ ऑक्सीजन रे कोटा हबो. राइट आंसर कोन हबो? राइट आंसर कोन हबो ना, दैट इज मैम द फर्मेंटेशन. But now the anaerobic breakdown of the glucose, that means amara oxygen ro absence re seita हुए. The anaerobic breakdown of the glucose is the what? Now ma'am the breaking down of glucose, that is the fermentation. Yes or no? Yes ma'am. So ame कहि परिबा कि the produces ethanol plus carbon dioxide, produces ethanol plus carbon dioxide in the fermentation. Yes, that is. और ame कहि परिबा lactic acid भी हमर कोठु नाही fermentation रो ही बाहर.
रेस्पिरेशन हेले आपण मान जानछन्ती रेस्पिरेशन ऑलवेज नीड द एरोबिक रेस्पिरेशन क्लियर चलो essential amino acids are those which मते कुह essential amino acids are those which जो माने बॉडी जदि क्वेश्चन फास्ट कोन अछि बॉडी कैन सिंथेसाइज काई जदि बॉडी सिंथेसाइज करि परिबो से माने कोन ना नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हे जिबे एग्जांपल आपण माने परिबे द अलानाइन द एस्पारेट ए माने सब कोन ना नॉन एसेंशियल को पळेबे कोथिरे ना मैम नॉन essential को पळेबे yes or no yes so body cannot synthesize that is the essential amino acid yes or no yes चलो next म देखो which amino acid contains sulfur अच्छा को amino acid रे आपण माने कर फॉस्फर रही छि कहिलो नंबर 10 photosynthesis चलो 11 को आसा sorry 12 को आसा which amino acid contains sulfur that is the methionine किए ना methionine कहा को कंसीडर करू छे the essential amino acid is the methionine and that contains the sulfur in the side chain and कोठे कहि परिबा that is the precursor of the S adenosine that is हमर कोन मिथाइल डोनर बोली हमें ताको कहू छे ये सनो बाकी सब हमर नॉन एसेंशियल next को the secondary structure of proteins is stabilized by the secondary structure of protein कौन पचार छी the secondary structure of protein कहा द्वारा stabilized हुए गाइस कहा द्वारा ना मैम हाइड्रोजन बॉन्ड रखिले से stabilized हेई परिबो stable हेई परिबो तो stabilize alpha helical and beta कोन pleated alpha helices and beta pleated को हमें कहि परिबा शीट द्वारा से stable हुए फॉर एग्जांपल आपण माने परिबा का कुना केराटिन को आपण माने नहीं परिबे केराटिन में कौन थाए ना अल्फा हेलिक्स थाए यस और नो यस मैम एग्जांपल आपण माने सिल्क फाइब्रन को नहीं परिबे सिल्क फाइब्रन में कौन थाए ना मैम बीटा सीड थाए यस और नो कौन थाए बीटा सीड थाए क्लियर तो क्लियर वेरी गुड चलो next को protein digestion in humans begins in कहा to start हुए protein digestion ना मैम डाइजेशन स्टार्ट हुए इनटेक हुए नी जदि आपण मानकर एठी माउथ पचारिला ताहाले हमें कहि परिबा ओनली मेकानिकल डाइजेशन हुए कोठू ना मैम सालिवरी अमाइलेज मिसी की स्टार्च सहित जाए बट एक्चुअली डाइजेशन स्टार्ट होची कोठू ना मैम माउथ सॉरी स्टोमक ठू ही होची सो ट्रूली हमें कहि परिबा पेप्सिन बिगिंस द प्रोटीन डाइजेशन फ्रॉम द स्टोमक तो स्टार्टिंग कोठू माउथ रु नाही स्टार्टिंग होची स्टोमक रु यस अमाइलेज सालिवा हमर हेल्प करे सालिवरी अमाइलेज हमको हेल्प करे डाइजेशन रे यस और नो यस मैम एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली जदी एसिड पचला हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमको हेल्प करे दैट एक्सपोजेस द पेप्टाइड बॉन्ड यस और नो वेरी गुड स्मॉल इंटेस्टाइन असले आपण माने जानि छथि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन रे हेल्प करे एंड लार्ज इंटेस्टाइन हेले कोन ना वाटर एब्जॉर्प्शन रे हमरा हेल्प करे क्लियर चलो नेक्स्ट मते कुह the end product of the protein digestion is the end product of ठीक है गला मैम मते कुह the end product of protein digestion कौन हबो ग्लूकोज हबो कि मैम end product of carbohydrate digestion कौन हबो ना ग्लूकोज बट एठी कौन पछाची ना प्रोटीन डाइजेशन रा end product कोथरे फॉर्म हबो ना that is the amino acid कोथिरे amino acid is the end product of the protein digestion that absorbed into the blood via the small intestine that is the amino acid yes or no yes ma'am so amino acid absorbed in कोथिरे ना मैम jejunum and the ileum रे से हमरो कोन absorb हे जानती मैम yes very good चलो next को मते fats are mainly stored in the body in the form of fats हम body रे store हे कि गाइस रुए but in the form of what fats are stored in our body in the form of what that is the kona na triglycerides in the form of triglyceride yes or no yes ma'am so glycerol plus 3 fatty acid मिसी के हमें कौन कहू this is the triglyceride yes na nahi yes ma'am chalo next what देखो the steroids that is lipid with 4 ring structure that is the cholesterol steroid hormones ए सब मिसी की steroids हमें कहू छे fatty acids आपण माने जानि सन these are the building blocks of the कोन body और हमें कहि परिबे fatty acids are the building block of the
ट्राइग्लिसराइड्स नेक्स्ट को व्हिच फैट सॉल्युबल विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग अच्छा ब्लड क्लॉटिंग सहित को विटामिन को तुम माने रिलेट करूछ with the blood clotting आपण माने जानि संती को विटामिन ना मैम विटामिन के ही विटामिन के को हमें हेल्प करछे ब्लड क्लॉटिंग पई जदि आपण माने को विजन रिलेटेड कहिला विजन रिलेटेड ग्रोथ रिलेटेड एपिथेलियल इंटीग्रिटी रिलेटेड हमें कहिले ताहाले कहा को रिलेट करिबा ना मैम विटामिन ए को जदि विटामिन डी कहिला दैट इज द सनशाइन विटामिन जानि छंते ना नहीं ये सेवती गुड इवनिंग तो मते को विटामिन डी को हम रिलेट करि परिबा कि द सनशाइन विटामिन एंड ता सहित कैल्शियम एंड फास्फोरस मेटाबॉलिज्म सहित रिलेट करि परिबो विटामिन ए सॉरी विटामिन ई अपन मान जानि थिबे विटामिन ई कैप्सूल मुहर लगे दियो दैट इज रिलेटेड एज द एंटीऑक्सीडेंट कहा सहित ना एंटीऑक्सीडेंट सहित ये रिलेटेड यस ना नहीं यस मैम नेक्स्ट चलो मते को सो के फॉर कोन जो विटामिन के हमें कहू जे एक्चुअली के टा कोन ना दिस इज द कोआगुलेशन कोन फॉर्म करे ये कोआगुलेशन फॉर्म करे that's why this is known as the vitamin K that easy to recall the vitamin K's role mone rakhitha the mote next ko the bile salts helps in digestion of bile amara help करे digestion रे बाइल हेल्प करे डाइजेशन रे कहार ना मैम हमर जो पित्त थाए बाइल ऑपरेशन हेले डाइजेशन कैपेसिटी कमी जाए सो ए बाइल्स ता हमर फैट रे हमें जो मटन खाई की सोई पड़छ राती रे भाबुनो एते हेवी मटन खाई के हमें सोच डाइजेशन होची कोथि पाए बिकॉज ऑफ दिस बाइल सो बाइल सॉल्ट्स इमल्सिफाई करे फैट्स को एंड इंक्रीज करे सरफेस एरिया for the lipase action clear that is stored in the कोन गल ब्लैडर रे हमर थाए and secreted from the liver present कोठी थाए गल ब्लैडर रे secrete कोठ हुए ना liver एति मन रख परिबो रिलेट करि परिबो so bile salt is equal to the essential for the fat digestion and the absorption next को which fatty acid is an essential fatty acid कहा को हमें गोटे essential fatty acid बोली कंसीडर करू छे palmitic acid गाइस ये गोटे सैचुरेटेड फैटी एसिड या को हमें कोन ना सैचुरेटेड फैटी एसिड भाबरे कंसीडर करू छे सैचुरेटेड फैटी एसिड बोली कंसीडर करू छे देन को नंबर 19 को दैट इज द लिनोलेइक एसिड कहा को ना लिनोलेइक एसिड कंसीडर करू छे दैट इज द ट्रू एसेंशियल फैटी एसिड ओमेगा 6 कहा को है मैम ओमेगा 6 को कंसीडर करि परिबो क्लियर इज दैट क्लियर वेरी गुड तो स्टेरिक एसिड हेले ये भी अगेन गोटे सैचुरेटेड फैटी एसिड स्टेरिक हेले ये गोटे सैचुरेटेड फैटी एसिड गाइस हमर ब्यूटेरिक एसिड हेले दिस इज द शॉर्ट चेन फैटी एसिड ओके नेक्स्ट चलो द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिपिड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिपिड हमें कहा को फैट्स केमिति कब होबो टिके वर्कआउट करो टिके जिम जाओ टिके एक्सरसाइज करो एंड तो माने कोन हमर सम्प वाटर पियो देखियो फैट कम हेसिबो तो नेक्स्ट मते को द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिपिड्स ऑलरेडी तो मानु कहि देछि लिपिड्स हेले बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिपिड हेले ग्लाइसेरॉल एंड फैटी एसिड सहित चूज करिवो का सहित ना ग्लाइसेरॉल एंड फैटी एसिड सहित चूज करिवो दैट कंबाइन ऑफ द फॉर्म ट्राइग्लिसराइड्स कोन स्टोरेज करि रखे फैट को क्लियर मोनोसैकेराइड हेले आपण मान जानि सन्दी कार्बोहाइड्रेट सहित रिलेट करिवे न्यूक्लियोटाइड्स हेले का सहित न्यूक्लिक एसिड सहित रिलेट करिवे अमीनो एसिड हेले प्रोटीन सहित रिलेट करिवे yes or no yes so aji pai एते की थाउ तो माने बहुत संख्या रे क्लास को देखु छ सेति भाई थैंक यू सो मच थैंक यू गाइस थैंक यू चलो have a good day guys take care of yourself and your parents first